Okay, say how's it? Sir, like I'm a print or money. Uh, oh. When object to do test number IK section B के part में को sir record तो रह गया section A दो में ना और इन अत्यंग बड़ा सरगा live तो पुनः discuss तो रह गया मैं B से मैं सीधा कोई discuss तो रह गया test number height work energy power अनादुगे test नहीं Section B को section B अपन नहीं ना इसे P1 series नहीं we are discussing the P1 series. So how is it question number 36? A particle is dropped from a height. A constant horizontal velocity is given to the particle, and the horizontal constant horizontal velocity is given to the particle. Take g to be constant everywhere. The kinetic energy is happening. Ma hai se keno. So constant velocity amati sida p reha ba. Yar ba x long is a vx arrow which is constant. Everywhere vx is constant. अदुबो y रोम ददी कई दवे along y दा initially माजे u y is 0 ni अदु सुन सुन थादर कदोरे थादर का मान करी हारे at a given time दा नगी net velocity के आनो हबा net velocity हाडी करी का मान गनी bx square plus by square ni because ani तो perpendicular होइना बनी ना और माना kinetic energy हाडी करी का मान रे at any time t दा half mv square सिगी v द स्क्वायर टपदी क्या तारे हाफ m हरगा vx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर सीने बता दे सिगी ग्राफ ये है बन अद m हरगा vx सिदी कह दो रे v अदुम ऑइलर नी always constant so v हरो it is v square यार वा vx ये कोई ये कई हाई जगह से नंगी v वो हरो नी v what about the vx अदुम हाई vx अदुम हाई which is going to be constant some constant square नी से constant नी काउरो इज को vy दी क्या तानी initially raise the layerambadagi drop tarokta at any point by have the mane uy plus ayt b equals to u plus at uy is 0 ni so it is nothing but ayt is gt so it is nothing but gt ka whole square that is g square t square now kinetic energy ka sika ye koi graph ye ke hardi hai wo kinetic energy has somehow bx a constant ni half m जो constant ni constant इधर some constant हम irregular some k कौबम k हाफ चलो दिया रोय some c1 हर गे प्लस हाफ m से ना g स्क्वायर t स्क्वायर मल्टीप्लाई तो नहीं हाफ m constant ni g स्क्वायर constant ni ये तो अतोबा constant में c2 हर गे t स्क्वायर सीधे का रिफॉर्म द ताय हरो सीधे y इक्वल्स टू mx स्क्वायर रिफॉर्म नहीं दैट इज पैराबोलिक ग्राम तारानी पैराबोला जो ना कि कह दो दबा सी y ने को से y intercept will be c1 है भाई टाइम जो जीरो शिन का y जे ये जे c1 ताइदना सो तो माय ग्राफ कमाई ये लानी डेफिनेटली खर काखलप्पा हो रहे सिदे एक होता यार है सो दिस इज योर नगे ग्राम नी काइनेटिक एनर्जी सी ले रे द लेफ्ट साइड कोई हाई रे अया मतलब याउन हंदे मन लेफ्ट साइड ता काइनेटिक एनर्जी क्या तानी लेफ्ट साइड टाइम से क्या तानी लेफ्ट साइड मखै टाइम क्या तानी नेगेटिव व्हिच इज नॉट पॉसिबल सो कोई सी एक तबिदा दिस इज द ओनली ग्राफ यार अब ऑप्शन नंबर ए सर प्री नंबर तौगे सिम सिल्लो को सर प्री नंबर तौगे ओके नाउ हाउ इज इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 याम फजबो क्वेश्चन हम ले रे पोलजी याम चंबको अदुब नंग कंसेप्चुअली क्लियर होइदे यादबजे माना करी हारे a block of mass m is attached to unstretched string ani se stretch चौधरी relax ni the block is displaced towards right lom na ngi displace चौधरी by distance x और x distance na right lom da mass से move तौबा कांदा obviously k2 हारे second spring से कदोरनी x distance compress तौरनी compress तौबा कांदे यो spring 1 जिसु m जिदा नगी fix तौर लेरी बनिना माना कदोरानी k1 जो x stretch तौरानी k2 दना x is compress of संगरनी
Find the speed of the nangi block as it passes through the main position. Yang horen compress over kanda what will happen? Sigi nangi x nangi extend the width ramni mass ida laire aduga amaduna kaido ba x compress of salabane. Magi main point as wide lehovane main point as wide lehovane. A sigi point jibo ko initial state 1 harazen. Next kari have a speed puthok to find the speed as it passes through the main point haba. Nano horen thadok kanda kaido Sigi main point obviously na spring do mass to compress torma thadok yan kaidorani paithurani left thangba there is first spring da mu compress torani adunong paithurani asum oscillate taw laidane in a simple harmonic motion da adimagi compress tawruraga thadok kanda paithurapagi mana main position je leiba kanda sibo condition number 2 hari sida khogi magi velocity kya hoega da ke hamne mass yung ahan ba case da kay dawin nagi compress tawre spring anima compress tawre thado ka doina na mass to dina compress tawda ngai ri na my velocity kya hoiri 0 in this case hauji case de haro mean position da di compress tawra thado rami na mass paithura ka dore paithura ka na my velocity am lairani si velocity pudo ka dani hauji ki si ka dore relax hoire the main position da lamna through there is hana original state si di yorami original state adi hana compress tawram de so nagi relax ni sisu relax ni haba ado kone iside energy conserve tawwe yae compress tawramaga just release act to give the atoba force am the act tawdreba force act tawrise only the nagi kanoni spring force ni which is conservative aduna koina kari have energy conservation na total energy at 1 jaga total energy at 2 ga manum thoem 1 da lege da total energy the mass block to the race layer velocity 0 ni the spring ani du kinetic energy ne and the spring right left side के spring दोगी क्या तारे half k1 x square right side के दे half k2 x square अदो अनि सुबह condition दे total energy हो जी spring सिंग तो relax ले रहा बनी ना block तो खके नगे velocity लानी half m v square अदो half मखे लोई कथा करो अदो क्या तारे हरो k1 plus k2 का x square equals to नगे m v square सिद्धगी नंगना velocity पुदोके हरडी m तो सोमदा सकरो v पुदोके हरडी हरो इदंग समझे लहरगा k1 plus k2 divided by m सिद्ध x square लेदाउनी अदो square root लामनी ना x मापांदे थांदो करनी so the answer is root over k1 plus k2 by m x सिलो okay यार next question number 38 a weightlifter lifts 300 kg from the ground at a height to a height of 2 meter in 3 seconds the average power is कोई ना खंगरे p average सबसे करेगा माना बा work done divided by time taken work done height आगे दियो mass sama sida leibadu mass nangi magi mass arumba m hairo sida nangi height powder sinkat ke haradi gravity ki force mg leire pukato ni mathakta pukat kede definitely nangi sida ne mathanda kakalo di yaro damni na nangi the work done by some force amana sida sinkalam da yaro ko je akoina kamaina low high icham chamna sum thangalakpa adagi ising chingkhalakpa adum be case already force mg ga dum manhan len low natri accelerate tawraga paikhala ne and see work done by this f sin gravity ki wangna te ko and sinkhal laka do ni mathanda di kakhalu yaro damina force amna singa to ni so work done by force adi magi force you know mg distance kam kaha to ba heights divided by time taken thi mass kya no 300 g to 10 loro heights kya no 2 divided by time de 3 adi kya tare it is 2000 watt 2000 watt adi yong sida 2000 kai do bai ta dre no my answer da g do suko shona mana 9.8 loro mane g do 10 ki mahut apna 9.8 loro madi answer is saurangna du tarni khanga me zum got pe aram height is 3 height is 2 adi kya tare 2 into 9.8 thi 9 19.6 into 100 the which is 1961 yaar ba tare exactly tare silo kidang thuna sir jino gi materials print kan toini ko ji
noi satra khara phangda yauri adunani. Now next question number 39. Question number 39. A car of mass m start from race hai hoini, and accelerate so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p naught. Any instantaneous power to p naught have. The instantaneous power p naught से constant है. That is power to constant. Every जगह the power से p naught already average का instantaneous को सब मान रहे हैं. Question number 39 मान करी है power to मान p instantaneous है. Average का जो सब मान है तो instantaneous होत पर न को मनी. P हाबजे P instantaneous to का जो मान रहे हैं always P naught ताल है. Everywhere power is P naught. Instantaneous power have the करेगा माने force and to velocity F भी दो तो मान दी angle तो zero नहीं लगा. अब this सीधे कोई न करी है भी आ रहे हैं. I know that palm is instantaneous velocity is proportional to having v have a do v is ga time ga na तरह mass का कमाई depend हो गया having. अब देखो ये power force have करेगा माने m dv by dt माने mass into acceleration to v ले रहे सीधा. अब ये dt तो समझ लो dt तो समझ लागता है कि p naught the m तो divide करो constant में खाई पुल से dt equals to v dv ले आओ integrate हो चलो constant में पांच थमो C pull-up से constant ही अदर से constant हमने E आ रही ना तरह से E को से हो क्यों ना E ले रहे equals to V square by 2 अदर V से कमाई depend तो रहा V B हाड़ी 2 तो हाँ ना सोमना तो थांगो 2 P naught by M T हारो square root 2 की root लो रो कोको. ओके ना यार अब this सीधे E बक कांद V से काना depend तो में तो V is directly proportional to P naught root over P naught T दा करियो P naught यहाँ गया हर गदी mass यहाँ गया हर गना root over T बा M पुन इधो बा अदो सुमा द ऑप्शन हम तो याद रहे ना T खत्ता की चुम्मे T दा हर गना root over T दा depend तो रहे M दा हर गना 1 by root M याद होगा 1 by root M याद रहे तो T दा मुग root याद रहे सिर्फ याद रहे T दा minus 1 by 2 ना ते root 2 खत्ता नहीं 1 by half होई तो T square दा ना ते depend तो रहे root over T दा नहीं so the answer is B यार बा V तो T दा कमाई depend तो गया है अदो माई ग्राफ ये वो हर जी यार नहीं parabolic ग्राफ तारा नहीं. Question number 40. When a body does work against friction के against थबक तौरता डी नंगी कई दोगे दबा नंगी when its kinetic energy है friction में ले रहा मैं friction the opposite और नहीं friction से against नंग थबक कर तौर है when a body works हमें को से external ना ते body मसामक तो this body itself is doing some work against the friction अनि वे आठदी body तो नंगी होरेन move तौर मनी friction हम ले रहा मैं ना सिगी फ्रिक्शन सिगी अगेंस्ट समान थबक तवे है बे अर्धे माजे मूव तवे है बनी दिस बॉडी मूव्स अगेंस्ट फ्रिक्शन द फ्रिक्शन के अगेंस्ट द बॉडी हम मूव तवतार गदी माय वेलोसिटी के दौरान हरो इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीजेस सो व्हेन अ बॉडी मूव्स does work against friction and the velocity will decrease so its kinetic energy will decrease so option number roman number 1 से कनादा मैच दौरानी roman number 1 decreases to s roman number 1 and s will be matched. Roman number 2, work done by the body is work done by the body ate ke gaya or independent of time again time force must be conservative the only option is work done has a force into displacement ni akoin hanjin jin hai gre sidin nagi f dot d time the depend taw de ba time yaura ga na kari hoy kada ba power hoy kada ba so it is independent of time ade kai have are p 2 in a p le 3 power over body varies inversely as haba kana lemory independent of time power di time de depend to independent have some lale power has na work done divided by time ni so obviously power is inversely proportional to time
q ले फोर क्या नो when work is done over a closed part when work done over a closed part is zero close part am chad yamai chal roga nangi sida halakpa kanda close part chal pa kanda work done zero tari se kaido no sin takpadi that is work is w is independent of part I ni मरमदी होबम गा लोइबम खक्ता तक डिपेंड तौर मनेबा मरमदी नगी होल वर्क टू जीरो तारे में हंजलप कांदा वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट हाइवे आठदी दैट इज फोर्स करी और मनी कंजर्वेटिव सो फोर्स मस्ट बी कंजर्वेटिव आर होय दो सो आर आंसर क्या तारे 1 की एस 2 की पी 3 की क्यू अदो 4 की आर जस्ट थ्योरी फजब जब को थ्योरी मचाम सा खतन क्वेश्चन नंबर 21 अब फोर्स F इक्वल टू माइनस के वाई आई प्लस एक्स जे हम फजर इसे आई द वाई तपसल है एक्स न जे तपसल है जे द एक्स तपसल है where k is a positive constant such x on a particle in xy plane starting from the origin the point a comma 0 and then parallel started from the origin to the haure starting from the origin से वही खरा वाले को the object moves to the point a comma 0 origin दगी haure हरगा origin दगी haure हरगा origin दगी haurगा कइदोरे मासी अहमदा it moves till the point a comma 0 sibo mazi move tore first case ta and then kaidore then parallel to the y axis to the point a comma b a comma a sibo mazi move to kale ahan bada part 1 da chale then part 2 da chale the total work done haven let us call this o let us call this a and let us call this b work total har gadi yo work part 1 plus work part 2 hello that is a o dagi a bok satpa ma a dagi b bok satpa ma ज्ञान तान नहीं वर्क वन पुतुक से दैट इज फॉर पाथ ओ दगी ए ओ दगी ए से मान पीरियड फोर्स से कहनो फोर्स इज माइनस के वाई आई प्लस एक्स जे ये ओ दगी ए से दा फॉर पाथ ओ दगी ए भागी पाथ से दा वाई की वैल्यू क्या नो ओ दगी ए भाग से दा वाई की वैल्यू क्या नो 0 देन अदो इतारगदी y से 0 इतारदी 4 से x वेरिएबल निको x 0 ओरमबदगिना a योखली नि मरक द वैल्यू मैम लेमगनी द फोर्स सब्जेक्ट कमाई बेर है द माइनस k x टाइम्स j अदो वर्क डन इन द पार्ट o a से क्या ताने हरो ददी फोर्स इज नाउ एक्टिंग अलोंग कदम दा j दा फोर्स इज एक्टिंग अलोंग j नि फोर्स ने नगे j रोम दा माय वैल्यू द वेरिएबल ओनिंबो ओइसन वैल्यू दो direction is always along the y axis move tawna kadom da tawriba o a gini ko nai nai je o dagi a da o dagi a da o dagi a da then adu ke donare makhoi ni ke donare displacement and force are perpendicular so the work done is 0 so that is f se ke doba is along y axis ne y axis lom the move tawre hai ne mai je for part o a sorry part o a gidi force se y axis lom the ek tawre hai ni adu move tawna o dagi a bhaw that is 0 tam to percent force is perpendicular to displacement so work 1 is 0 work 2 gidi that is for path nangi a dagi b bhaw da a dagi b bhaw da ne handik kaino haro a dagi b bhaw da sinan ha bada force puthok se a दगी b द कानानो से द कांस्टेंट ओरिजिन x की वैल्यू से क्या नो a नहीं x की वैल्यू द a इसलो माइनस k इरो y द वेरिएबल नहीं y दो 0 ओरम बदगी a ओ कली में वेरिएबल नहीं सीधा i थमो प्लस y रोंगी तो x की वैल्यू क्या नो x a नहीं सो a j नाउ सीधा कोई फोर्स कंपोनेंट नहीं सूरे फोर्स कंपोनेंट नहीं सूरे माइनस k y i हैबा मा माइनस k a j हैबा मा अब अहानब कंपोनेंट की येंजे सी कंपोनेंट ताइजे कनो मागी फोर्स की डायरेक्शन x लोम चली हाइनी अदो मी डिस्प्लेसमेंट दी कदम चलिनो ओ दगी ए द अदे मागी कंट्रीब्यूशन क्या तारे 0 सो नन खंगदबा नगी वर्क ऑफ दिस फोर्स by minus ky I is equals to 0 ni since nagi it is perpendicular to displacement but sigi nagi ka je hariba part amadi lehoribra
वर्क डन ऑफ दिस फोर्स बाय माइनस के ए जेदी क्या था फोर्स हजिक जे रोम पीरे दैट इज वाई रोम लाए मागी वैल्यू जो कांस्टेंट ओरे माइनस के ए ओरे कांस्टेंट फोर्स नहीं अब माने सतोरी डिस्प्लेसमेंट क्या नो ओ दगी ए भाव दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट सो वर्क डन क्या तानी वर्क डन क्या तानी हेरो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज माइनस के ए इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या नो दैट इज माइनस के ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर minus k square. So therefore, work 2 is nothing but minus k square. Work 1 0 चक रहे work 2 दिशी तारे so total work क्या तारे therefore total work क्या तारे रो तो देखिए work total क्या नो w1 plus w2 which is minus k square which is minus k square हजार वो क्वेश्चन है कैसे हम चलो क्वेश्चन नंबर 42 चलो चलो आता चलो सर प्रिंटर जमा सेम के now question number 42 question number 42 question number 42 A force acting on a body moving along the x-axis varies with the position of the particle as shown in the figure. The body is in equilibrium, in stable equilibrium. Good. We are going to discuss this stable equilibrium. Force का displacement का ग्राफ पी रहे हैं. Force का displacement का ग्राफ पी रहा कोई ना खंगे. Question number 42 था. Force सब्जेक्ट करके माने minus du by dx. One dimension की दिशा डायरेक्ट इवे आ रहे हैं. अब देखो ना आ रहे हैं for equilibrium. Equilibrium दे करी वही तो बाहर हो. F क्या वही तो बा 0. That is du by dx must be 0. अमुक मान करी हारे for stable equilibrium. Equilibrium द मखल याम ले बा. Stable equilibrium ओई के हरडी. U must be करी हारो minimum. U must be minimum. Equilibrium हारडी U minimum ओई दो बा. U minimum हाई बे आर्थदी कह दो बा. Double differentiate टौरकांदा हारो हारो. Double differentiate टौरकांदा greater than 0 ओई दो बा. Minimum function की condition दो. यार हो से. That is U the double differentiate टौबा हारे दी. yung ff हाइबजे du by dx ni minus को अब दिस माय ये इरो ने du by dx हाइबजे minus f ने इरो सीधा डबल डिफरेंशिएट होगा means f the differentiate होगा ने f the one time differentiate होगा ने df by dx अदुग माइनस समझो हाफ का दबा यार बस है अरे d d2u by dx स्क्वायर से पॉजिटिव ओहन बाहाइबे अर्थ दैट इज d2u by dx स्क्वायर हारगा दी माइनस dA by dx का मान है it is must be greater than 0 माइनस असोम थांग रकांदा dA by dx must be less than 0 dA by dx हाइबजे नगी स्लोप इन fx कर्व नत्रो fx ग्राफ की स्लोप नि हाइबा अद fx ग्राफ की स्लोप से के दवाल हाइबा नेगेटिव ताहालो हाइबा अद खलो fx नगी x1 का x2 का जिदा हारो स्लोप नेगेटिव ताहाबजे करम पॉइंट x2 and f0 जो होएगा तो नहीं f0 होए बाहर के पॉइंट अनि नहीं x1 दसो होए x2 दसो होए f0 की लाइन अत्र जे f0 खक होए बनतना नगी df by dx जो लेस देन होएगा द स्टेबल इक्विलिब्रियम होएगा हरडी दैट इज स्लोप शुड बी नेगेटिव सो स्लोप नेगेटिव द करम बनाओ स्लोप नेगेटिव द करम बना रो x को x हम्म
Now we are. Let's talk about question number 43. Question number 43. Section B की question मखै खरा दुम फजरकनी अन से कोई एक्स्ट्रा ओइना खरा जो साना तांगनिंग क्लास अजी ताको ngमदबा यादव सिंह सिदा खरा ताया तो सी जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज के एनालिसिस पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन है खल्लो है for the path PQ are in a conservative force नहीं conservative force होता है work done is independent of path and the work done in a closed loop is zero and the initial final मान रहा है ना the amount of work done in carrying a body from P to Q P दगी Q भावदा P दगी Q भावदा पूबा कांदा माई work done दो क्या ने हवा is 5 joule and from Q to R Q दगी R भाव पूबा दना work done क्या ने हवा 2 joule then work done in carrying the body from P to R 6 लो P दगी R दा पूरा कांदा work done क्या ताने हवा अकोई नंग खंगे नंगे since force is conservative ना तरका for conservative force for CF for conservative force work done in closed loop is zero the closed loop is zero and that is work done from P dagi Q bhoma plus work done from Q dagi R bhoma plus work done from R dagi P bhoma this must be zero P dagi Q dagi 5 joule तार है Q दगी R भाव दगी 2 तार है और R दगी P भाव दो क्या तार R dagi P भाव की वर्क डन दगी थांगा -7 तार है बट माना पामी ना P to Q ने the P to Q har gadi minus of work R to P होई तारे which is nothing but 7 joule the -7 yaron bakanda -7 खोथिनु यारवा it should be +7 यारबो question number 44 a particle is moved नगरे से सिलम मुझे सर command of the field now question number 44 a particle is moved from 0 0 कोऑर्डिनेट इसी origin से दगी to a भाव चले यार वाइसन दन o दगी p भावनी by a force this much in two parts okay o दगी हौरगा a भाव p भाव चलते बा in two parts अमन करी फर्स्ट पार्ट से ओ दगी q भाव चले q दगी p भाव का चले नहीं फर्स्ट पार्ट से ओ दगी p डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट इज o दगी p डायरेक्ट सेकेंड पार्ट से o दगी q भाव चले q दगी p भाव चले the animak sida changibo work done w1 w2 period then find the relation between w1 and w2 force a constant variable hanamti amo what is this force constant or variable force a constant or variable ho since f har gaman p is a 3i plus 4 zenina which is constant force constant bu already work done already f dot d direct e robo where d is displacement D is displacement. Displacement had a final minus initial. Displacement क्या ताने हरो final minus initial. In both cases को अनिमक case 1 case 2 दा initial and final point are same. Initial point से क्या नो in both the case O नी. Final point in both the case final से क्या नो P दा लोड दो नी. So displacement will be same. D will be same. यार अब D will be same. Now, since f is also same, d is also same, so therefore w1 will be equals to w2. Yeah, good. Follow drugs. W1 will be equals to w2. Force constant होई बनी को ममांग द कोई क्वेश्चन में होती है force constant होई दे force constant होई दे बनी ना कोई तोंगान तोंगान थुआरो होती है क्वेश्चन नंबर 41 दो so don't get confused. Question number 45. A particle is released from a height at a certain height. At certain height, its kinetic energy is 2 times. heights तगी माजे थादग रे heights तगी थादग रे heights तगी माजे थादग रकांदा at a certain height particular height अमदा मागे kinetic energy से कहने हवा certain heights फायदा रो
at this particular height मागी kinetic से कोई 1 को एक से state से 2 है रो मागी kinetic energy से k2 द लाइबा मागी point से kinetic energy से 2 times its potential energy नहीं u2 है रो अब दरमान है रे height and the speed of the particle at that instant से ये instant द लाइरम गदा मागी speed v and height h पुतो है बनी बोल दो था कि बनी था कि ताड़ी initial velocity 0 नहीं तारीब force gravity force so energy is conserved अतोपा non conservative याद रहे by energy conservation total energy at 1 equal to total energy at 2 total energy 1 the labor energy the potential करता नहीं mgh kinetic याद रहे 2 the potential जो like kinetic so like and swine the han ige k2 plus u2 है इधर relation में सावे आना अदे पीरी बा आंसर खुद ही मग से h से लोई सारो है रबनी ना h की term that there is potential की term the साजी we know that k2 is nothing but twice of u2 अदे सीधा twice of u2 iro सीधा नंगी u2 iro so नंगी mgh ले रहे सोम द नंगी 3 times 2 का 1 के 3 times u2 u2 द क्या नो mg का करें so your h small h is nothing but h by 3 so h is h by 3 ले रहे भी पुतो के हरडी again अकोई ना खंगे k2 है से twice u2 का माने नहीं है करें अद k2 हर कदी हाफ m v2 स्क्वायर नहीं यार v स्क्वायर है ये सीधा लेके तो v दो v e करें u2 से ना mg ना ये h मचा दो m का करें अदे v स्क्वायर है बकांदा 2 सो में चले दी 4 ले रहे g ले रहे h मचा के होता h by 3 so v is nothing but root over 4gh by 3 4 दो मापांदा लंग थोगा नहीं माने सीधा 2 था मेरी so the answer is b यार अब चलो next question of 46 a block of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second x direction the nimana move tower में mass constant speed नहीं है तो 10 meter per second is subjected to a retarding force of 0.1 x यूनिट के मथा सारोनु न्यूटन ई दबिदे जूल पर मीटर एरिया मथा सागनु जा माने during its travel from x को 20 to x को 30 सनगी आहान बद माजे कांस्टेंट स्पीड अमद मूव तोड़ लामनी माय मास लेरे v लेरे v दु 10 मीटर पर सेकंड पर्टिकुलर नगी x इक्वल्स टू 20 है योब जगह से तगी नगी रिटार्डिंग फोर्स में एक तब हो रहे व्हिच इज 0.1 x दिस इज फोर्स केनो वेरिएबल दिस फोर्स इज वेरिएबल न वेरिएबल फोर्स में दमाज एक तौरे वेरिएबल फोर्स में दमाज एक तौर में डेफिनेटली माय स्पीड डिक्रीज तौरानी कदाई बाबा फोर्स एक तौरीबा -30 30 बाबा हाइट बट 30 से योबा का माय काइनेटिक एनर्जी क्या नो है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी k2 हरजे सिगी इनिशियल पॉइंट से ना k1 हरजे अने सीधे कोई करेगा माने बाय वर्क एनर्जी थ्योरम ना बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क टोटल है जे करेगा माना बा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हर गदी फाइनल k2 k1 वर्क टोटल है कांददी करी करी वर्क क्या होगा नहीं अतोबा फोर्स हम द पी दरमिना डायरेक्ट सी की फोर्स पी रो वर्क डन बाय दिस फोर्स ने सो k2 k1 अब दे k2 से क्या मान रहे हैं k1 असम थांग रकांदा k1 wf since wf नगी force is a variable force of the my work पुतो कांदा इंटीग्रेट होता रहे so we are going to integrate this integrate तोबा कांदा नोइना ने सोइदना 0.1 x तंग थममदी हम लाले the integration of f dx somebody we must write a minus here kai do no basi retard tawre have ne retard tawtar gadi x na right side the move tawba kanda force should be move nagi acting in the left side that is force and the displacement will be opposite already minus tham hoidro work done da so never forget this adi sidi integrate tawkalo k1 to the half mv square ni m haraga magi sigi b ahan b du वैल्यू कौन है जी माइनस लानी f तना 0.1 x dx लिमिट फ्रॉम 20 तक 30 पावर
एम की वैल्यू थी क्या नो माई मास क्या पी 10 kg भी तो क्या था ला में से 10 मीटर पर सेकेंड 10 स्क्वायर माइनस 0.1 थी कौन से नहीं लंग रहो एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 नहीं लिमिट फ्रॉम 20 to 30 सिना कहो 5 so from the 500 ले रहे माइनस 0.1 by 2 into 30 sin लदी 30 square 900 20 sin लदी 20 square 400 900 minus 400 थी 500 so सी क्या तानी 250 point मांगन नबा 25 500 minus 25 थी 475 so the answer is 475 जो फिर क्लासेस वाला में तो क्वेश्चन है वो सौरा दो सिलो रिकॉर्ड हो नहीं ना क्वेश्चन नंबर 47 in position A kinetic energy of a particle is 60 joule and potential energy is minus 20 joule. In position B kinetic energy is 100 joule and potential energy is 40 joule. Then in moving the particle from A to B, A high river position से तुम्हारी potential energy क्या minus 20 joule, kinetic energy क्या 60 joule. B high river point से दना मागे potential energy 40 joule, kinetic energy 100 joule. सीना तुम्हारा high joule. एदगी बी द चटप कांदा वर्क डन क्या क्या नो हंगनी अखोइना खंगे अहांबद मान पुथोइ कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मानेगी बनी सॉरी सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सॉरी 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 वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स से डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाउ करेगा माने माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स the work done by conservative force has a minus change in potential energy. So minus change in potential energy the final the क्या नो 40 initial क्या नो minus 20 खाई दूंगा रो 40 minus minus 20 क्या नो 60 so it is minus 60 joule. It is minus 60 joule. सरप्रिंट नंबर काफी है. ओके अब क्या तारा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मान 50 हर इज नखे सिंगल ला लबा इट शुड बी minus 60 वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है डी नंगी सिदा अतोप फोर्स अमा दिसोन यावर मनी ए दे बी द मथन चलो दी यारो अतय अमते यन हान यंगी जी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अदि समसन वर्क टोटल दुनी वर्क टोटल दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का माने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 100 इनिशियल इज 60 ये तो क्या तारा है 40 जूल सो वर्क टोटल इज 40 जूल सी मदी चुमे को जा मान एक्सटर्नल फोर्स है ना मा हाई रेजे सी की जंदे यंगम की जी अकोइ न खंगे सिंस वर्क टोटल है विज वर्क कंजर्वेटिव ने वर्क अतोप फोर्स मान इज द एक्सटर्नल पल मीन एक्सटर्नल हैरो इट शुड बी इक्वल्स टू क्या का माना अगर अबाउट 40 अरे वर्क एक्सटर्नल तो क्या का माना तो है 40 माइनस वर्क कंजर्वेटिव फोर्स क्या नो minus 60 अरे पुल दे क्या आता है 40 minus minus 60 दी 100 joule so work done by external should be 100 joule अदो मान external तो 40 है रे this is wrong so लोई लाले so the answer is C. क्वेश्चन नंबर 48 सिमा यो अनलकीली क्लास से सरना खोदख्रे अदो सिदा डायग्राम यावरम द्रे हबा डायग्राम यावद्रदि क्वेश्चन होट पे यारोय सो इट विल बी अ ग्रेस मार्क. So last two question last two question last two question मान करे हारे सीधा क्वेश्चन 49 दा a machine which is 75 efficient use 12 joule energy in lifting 1 kg mass through a certain distance machine हम से नगी क्रेनिंग खलो यार बा जेसीबी का हारो ने सिज नगी पुखला का तोरे मास m को बम ख सम हाइट अमा पावा सम हाइट्स पावा चिंखटप कांद मान सीनरीब एनर्जी से क्यानो सिबु चिंखलप कांद सीनरीब एनर्जी से हाउ मच एनर्जी हारोगे machine दुगी machine में से ले रहे machine दुगी सुंदर इनपुट से machine में ले रहे से फॉर इंजन दगी पिरक पे कनो दो पावर दो नत्रगा से नगी कनो दा कोई सॉकेट नमसे लगो कोई ये लाइन दगी लौरी बना की पावर दो हारो ने सीजे क्या लौवे हबा क्या नो मान लौरी जे अदुमान आउटपुट ओइना मान पिथोर कांदा आउटपुट हाइडी क्रेन दुना तसेंग ननगी मासु चिंखलिबा पावर दो
crane do na pirak pang ngamba do pirak pang ngamba mang mada pishan do na ta mana pithorok pang ngamba pithorok pa do na ni ma thanga tu si kya ne haba efficiency 75 ha ga 75% khaktan haba 75% of the input to neba mana pirak do 75 / 3 by 4 into 12 adi kya tare 9 joule only 9 joule energy sin man pirak do hai riba 9 joule do na thangalo do ne se ada hai kyam thangalo mani then this the IP input on egress energy input on U, energy output U, E the pyramid. It is this E output which is going to be used in lifting this. अब दिन height put हो गया so height to find heights energy conserve तो कौन क्या है ना तरह का energy की equation ही क्या है energy conserve तो दिया है क्वेश्चन height से put हो गया है whatever energy पिछले लिखी बदो ಅದು ನನಗೆ potential energy ದ convert ಹೋಗಿದೆ ಅದು heights के माना मनी 9 by mg 9 by m दी क्या नो mass 1 g दी क्या नो 10 lower g c is 9 equals this is 9 so 9 by 10 is something 9 by 10 then adu itaragadi hore namuk sidagi di maase thadagi dore ji heights fo bukhala me heights fo bukhala maase thadagi dore the mass is then allowed to fall through the same height sidagi maase muk thadagi dore farak ni mai chinkhala ma thada do thadar upakanda si ground ji upakan my velocity kya hoini haba initial velocity u0 they thada ini the velocity to karike mana hi formula do root over 2g heights so root over 2g into heights kya no heights kya no 9 by 10 g का 10 का कथन ना करो अभी क्या था होगी root over I10 so the velocity is root over I10 meter per second very simple like class जो को train खले इसमें I have already solved this in the class last question question of 50 a body is allowed to fall freely under gravity from a height of 10 meter 10 meter height सीधे माजे था दर कतो नहीं it loses 25% of its energy due to impact है makada tarakpa kanda nagi ground ga magi impact na maram ora kedoba 20% energy is lost ne adu hore nang na ma se tara matung amukam ma se chongkhat pa kanda kya gatang haironi 75% energy gatang haironi of initial energy dugi adu obviously energy ma mang rabina kai dore sida kai dongoi da hanagi high to yong amoroi spy high chigada yong am dore this is the initial peak this is now the peak for after one impact heights dia saro natraga hanagi do heights achobu iro hanagi jin heights macha iro adi kari hari with the maximum height it can rise after one impact see height put ho hai yengo sida yam chamba consume loge usin see is 1 kauro see is 2 kauro total energy 1 haibam laini total energy 2 haibam laini kamai put ho ni se peak yorapa kan the whole energy to potential loy convert hogi do ne total energy have say it's nothing but magi mg h to ne sida su total energy have say mg h macha do ne by question na kari hai rea whole process da process do impact khata ni koi energy mang de 25 energy mang have ne 25 energy mang 75 ti lemhori na tro hojik lemhori ba energy do na ne ba 2 euro this that is by question na to the labor energy have a 25% mang reharaga initial dugi 75% 75% of total energy of one initial dugi 75% ngai hore hai den total energy at 2 have at the mg h 75% is the 3 by 4 years are t1 mg h choba so h macha do kari ga man re 3 by 4 times h choba which is 10 adi kya tani 4 na sida 2.5 adi kya tare 7.5 meter so the height after one impact will be 7.5 yaad adra chalo and the first minor section B akoi hana tawthoe section A jima sor horen live ta puna tharani ko tawda bu sigi lecture je tharak pa kanda di na section A gi discussion tawra matung da tharak pa yai natraga ko mamang thajara okay yenga ge sir ado noina haren hayeng phajana yengba kanda di section A hana yengo ado section B yengo taraba section B da usually question khara phajaba happy sana sina no ko ye kitang higher level da prepare tawning ba singi rank hayeng wan taning ba singi ado section A ge part adu madi noi phajana haita yade section A da so aruba mem yauri adu aina noi da hai do je yaren khai te se ko ye preparation ge part ama ni hena khalle har ga phajana analyze taw tor sat ko class loina question hot pa yadam ne sarna dpp ki through da natrana ki question smart test ki through the question khar zoli these are also important okay araba
फरे लोशलजी हयें थेंगनरजी नत्र होरेन थेंगनरजी सरना नुंग थेंदा रिकॉर्ड तौबनी होरेन नुंगदांग थेंगनरजी बाय बाय सी यू देन